This boat, belonging to the Maritime Security Agency, is carrying relief goods for the people of Pasni in Balochistan. After battling the rough sea for over 31 hours, the boat finally arrives at the Gawada port. Trucks load and head for the Maritime Security Agency's station in Pasni. Right now we're traveling from Gawada to Pasni. We're hitchhiking on the back of a truck. This is one of the trucks carrying the relief goods that were transported from Karachi. Now, it's going to take us about 3 hours or so to get to Pasni, and the reports we have from the locals in Pasni at the moment indicate that the situation there is quite terrible. Obviously, once we get there in about three hours' time, we're going to be better placed to assess the situation on the ground. Bumpy roads were not the only delaying factor during the journey. Loyalists of a local leader tried to hijack the truck, but they backed off after some show of power by armed guards on board the truck. In Pasni city, things look quite normal. Well, except for the non-availability of clean drinking water and no electricity for the last 15 days. With no option left, locals here have resorted to drinking weeks-old accumulated rainwater. This has resulted in an exponential rise in stomach-borne diseases in the area. There is one hospital in the city. Right now I'm standing at the only hospital in Pasni. We received complaints that there are no doctors to attend the patients. We've come here to find out whether that is true for ourselves. Let's go in and find out. इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 2 डॉक्टर मौजूद हैं जी। आप किससे डॉन से ज़रा उन डॉक्टर्स को बुला सकते हैं? हमारे इंचार्ज साहब से बात कीजिएगा, वो वहाँ पे दूसरे कमरे में बैठे हुए, वो जो है वो ADHO। डॉक्टर्स किस डिपार्टमेंट में? डॉक्टर महबूब साहब हैं। और वो हमारे इंचार्ज हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। नहीं, 2 डॉक्टर्स जो ऑन ड्यूटी वो कौन कौन है? मैं डॉक्टर नज़ीर अहमद मेडिकल ऑफिसर, बाकी वो डॉक्टर साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कीजिएगा। ये इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो हमारे ADHO हैं, वो आपको तफसील से बताएंगे। इस वक्त कितने डॉक्टर्स हैं ऑन ड्यूटी? इस वक्त हॉस्पिटल में 4 डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं। 4 डॉक्टर्स हैं? जी हाँ, मैं असिस्टेंट हूँ। मैं डॉक्टर महबूब अली, डॉक्टर नज़ीर अहमद, डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ और डॉक्टर मोहम्मद जहान। कहाँ हैं वो डॉक्टर्स? डॉक्टर नज़ीर अहमद वो बैठे हुए हैं, और वो अभी वो थोड़ी देर में, रोड सही नहीं है, रास्ते सही नहीं, वो अभी पहुँच जाएंगे 5 मिनट में। बाकी 2 डॉक्टर्स अभी पहुँचे नहीं हैं? पहुँचे हुए हैं, नज़ीर अहमद बैठे हुए हैं। नहीं, आपके 4 डॉक्टर्स हैं? हाँ। तो बकिया 2 कहाँ हैं? एक आप हैं, एक डॉक्टर नज़ीर हो गए? जी हाँ। 2 और हैं? 2 अभी 5 मिनट में आने वाले हैं। अच्छा। Well, one of the doctor tells us that there are 2 doctors presently on duty. The in charge says there are 4, but then he sort of retracts his statement by saying that 2 of them are on their way. This is the state. Let's go and speak to some of the patients and see what they have to say. बीमार है, इधर इलाज भी नहीं है, पूरे डॉक्टर भी नहीं है सही है, बीमार है, इधर कुछ भी नहीं है, इंतज़ाम भी नहीं है। आप कितनी देर से यहाँ बैठी हैं? कितनी देर? 1 घंटा है। 1 घंटा। वो क्या कहते हैं जब आप बात करते हैं? डॉक्टर नहीं आया ना, डॉक्टर आया चेक करेगा। This is one of the wards, no patients in there. Now the state in Pasni is that there is a need for hospital beds. We have hospital beds here but no patients, so obviously something is not being utilized. Gynecology department कहाँ है आपका? है उधर पीछे। वहाँ दिखाइए। Let's go and find out where the gynecology department is and what the state there is, because the gynecology department, especially in a country like Pakistan, is typically very active most of the time. Now, we seem to be getting contradictory statements from the staff here at the hospital, and obviously there seems to be a lot of juggling involved. ये एमओ बैठती हैं यहाँ पे। कौन? एमओ बैठती हैं, लेडी मेडिकल ऑफिसर बैठती हैं। ये गायनोलॉजिस्ट, वो अभी वो गए इस्लामाबाद, उसका कोई कोर्स है 2-3 दिन का। अच्छा, तो उसको करने के लिए गए हैं। गायनोलॉजिस्ट की जगह है, उनकी जगह कौन है? उनकी जगह LHV आती हैं। कब आती हैं?
वो आते होंगे भी रास्ते में, क्योंकि पानी मानी वगैरह है रास्ते में, बारिश की वजह से रास्ता भी ख़राब है, थोड़ा लेट आ जाती हैं। तकरीबन जो है 9:30 बजे तक 10 बजे तक पहुंच जाती हैं, समझ गए ना। So as he puts it, the gynecologist is away on a training course to Islamabad for a couple of days, and the person who's replaced the gynecologist, who's the replacement, the temporary replacement, is the sort of excuse we've been getting for others as well, is on their way. तो क्या arrangements हैं मतलब नाज़िम की तरफ से यहाँ पे? नाज़िम की तरफ से क्या है, नाज़िम को कुछ मिलता नहीं है हमें, तो क्या कर सकता है, समझ गया। वो अपना दौड़ धूप करता है, भाग दौड़ करता है और कुछ नहीं करता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फंड्स तो काफ़ी आ रहे हैं, फंड आ रहे हैं, वो फंड जो है कहीं और बंटते हैं। कहाँ बंटते हैं? यहाँ गलियों में, मोहल्ले में। कौन ले जाता है? यही खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में। नहीं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो नाज़िम वगैरह हैं उनके तो एक ही पार्टी से ताल्लुक है। नहीं, कहाँ चले जाते हैं? वो यहीं जो जितने फंड मिलते हैं या आपस में कुछ कर लेते हैं। Fortunately for the people of Pasni, a Red Crescent team has just arrived in the area. Locals requiring medical assistance are now relying on the Red Crescent team. With the repair of roads leading to Pasni, relief goods have now started moving in on a regular basis. But lack of clean drinking water continues to be a major issue. Drinking water has always been a problem in Balochistan because you can see when you will be going around that the places where there's a lot of water, the bowser comes over there and picks up from there, and that has been provided. So if, in present crisis-like situation, if a good company establish a desalination plant or around the sea, it will be a good help for the people. Some say that the government should pay heed to this piece of timely advice. They say a desalination plant in the province should be given more consideration than some high-rise towers. Hassan Abdullah, Dawn News, Pasni in Balochistan.